उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से पीएम मोदी को लेकर किए गए सवाल पर राहुल गांधी को दिए गए नोटिस पर सोमवार को राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी को लगता है कि वो बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं है कि नरेंद्र मोदी वो आखिरी चीज होंगे जिनसे मैं डरूंगा। संसद में दिए अपने बयान को दोहराते हुए राहुल गांधी ने कहा, संसद में मेरे भाषण के कुछ अंश हटा दिए गए। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। मैंने जो कुछ भी कहा उसके संबंध में मुझे सबूत दिखाने के लिए कहा गया था और मैंने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने सबूत के साथ हर बिंदु को हटा दिया है। According to the rules, a speech can be, parts of a speech can be removed from the record if you are saying something without support or if you are insulting someone. I did not insult anybody. I used the kindest language, the most polite language, and everything I said was based on proof. I was asked to show proof with regards to what I said, and I have written a letter to the Speaker with every single point that they have removed and the supporting proof. But I don't expect that my words will be allowed to go on the record. At the same time, the Prime Minister directly insults me. He says, why is your name Gandhi and not Nehru? So the Prime Minister of the country directly insults me, but his words are not taken off the record. But it does not matter because the truth always comes out. And all you had to do was look at my face when I was speaking and look at his face while he was speaking. Look at how many times he drank water, how his hand was shaking when he was drinking water, and you'll understand everything. He doesn't realize the absolute last thing I'm scared of is Narendra Modi. पानी पीते हुए पीएम मोदी के हाथ कांप रहे थे। राहुल गांधी ने लोकसभा में दिए अपने बयान पर अड़िग रहते हुए कहा, सच्चाई हमेशा सामने आती है। आपको बस इतना करना है कि जब मैं बोल रहा था तो मेरे चेहरे और पीएम मोदी के चेहरे को देखना चाहिए था। देखिए कितनी बार पीएम मोदी ने पानी पिया और कैसे पानी पीते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। एक दिन सच्चाई का सामना करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा, पीएम को लगता है वो बहुत शक्तिशाली हैं, लोग उनसे डर जाएंगे। पीएम को इस बात का एहसास नहीं है कि मैं जिस आखिरी चीज से डरता हूं वो नरेंद्र मोदी हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो भारत के पीएम हैं, क्योंकि एक दिन उन्हें अपनी सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर किया जाएगा। Few days ago I gave a speech in Parliament about the relationship between our Prime Minister and Mr. Adani. I spoke in the most polite, respectful tone. I did not use any bad language. I did not abuse anybody. I just raised certain facts. I pointed out how Mr. Adani traveled with the Prime Minister to foreign countries and immediately after was rewarded by getting contracts in these countries. I showed how 30% of the airport traffic is today controlled by Mr. Adani simply because he has a relationship with the Prime Minister. I spoke about how the rules were changed so that Mr. Adani could get these airports. Earlier, people who did not have experience in running airports were not allowed to participate, and the rules were changed to allow Mr. Adani to participate. The Niti Aayog, other institutions commented on this and said he should not be allowed, but he was still allowed. An official in Sri Lanka stated in a meeting in Sri Lanka, in a public hearing, that the President of Sri Lanka told him that Mr. Modi had pressurized him to give a contract to Mr. Adani in Sri Lanka. Immediately after the Prime Minister went to Bangladesh, Mr. Adani gets a contract from Bangladesh. Mr. Adani and the Prime Minister go to Australia. The State Bank gives a loan of $1 billion to Mr. Adani for a mining project. The biggest, most strategic airport, Mumbai Airport, is taken over by Mr. Adani after agencies threatened the people who ran the airport. And after I gave this speech, most of my speech was edited out and was not allowed to go on the record of Parliament.
apparently saying the name Adani and Ambani together is to insult the Prime Minister of India. But you can see pictures of them together all across the internet. You can see the Prime Minister flying in Mr. Adani's plane. You can see him relaxing, laughing with Mr. Adani inside his plane. Mr. Adani travels on delegations with the Prime Minister to foreign countries. He magically arrives in foreign countries when the Prime Minister is there. And nothing that I said was untrue. It is all factual. And anybody can go in the internet, go to Google and ask the questions I have asked and you will find over there. राहुल गांधी ने लोकसभा सचिवालय की आलोचना की। केरल के वायनाड में राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, लोकसभा में दिए मेरे भाषण का अधिकांश भाग हटा दिए गए और इसे संसद के रिकॉर्ड में नहीं जाने दिया गया। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी कहते हैं आपका नाम गांधी क्यों है, नेहरू क्यों नहीं। इस तरह पीएम मोदी ने सीधे तौर पर मेरा अपमान किया, लेकिन उनके शब्दों को सदन की कार्यवाही से नहीं हटाया गया। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी के बीच के रिश्तों को लोकसभा में पूछते पूछते कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भेजे गए नोटिस के बाद पूरा विपक्ष भाजपा पर हमलावर बना हुआ है। वहीं राहुल गांधी के वायनाड में दिए गए बयान के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा है कि संसद में असंवैधानिक भाषण को हटाया जाता है, वो किसी पद से तय नहीं होता है। राहुल गांधी संसद में बकवास कर रहे थे तो उसे हटाया नहीं जाता तो क्या किया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।